मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफज़ा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफज़ा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk।
महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल मोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची का कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल मोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका
जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल मोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफिजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची, हैदराबाद एम। Hello, Assalamu alaikum and welcome to this Game 9 of Gul Mohr City presents Youth Friendship League. The two teams that are battling out tonight are NJS Chargers and MASHAL Plastic Tigers. NJS Chargers earlier winning the toss, and there was no hesitation in choosing to bat first. The two top group openers out in the middle are Chaudhry Saif and Munib Javed. Noman Chawla is going to take the new ball from the opposite end. It's a very crucial match for NJS Chargers. Nice start, the ball coming back into the batsman. The batsman easily played down to the cover. No run taken. This is the fourth match of NJS Chargers in this tournament. So far they have lost 2 and won only 1. So this is a pretty crucial game. They need to win tonight to make sure that their chances are alive in this tournament. There he goes again, the ball coming back in, the batsman giving charge down, coming down the track, completely missing that. He was looking to play it on the offside, but completely missing it. It was very close to the outside edge as well. On the other hand, MASHAL Plastic Tigers are playing their third game after a good gap of 6 days. So their players are going to be relatively fresh. They won their first game and their second game ended in a tie. So they are at a pretty respectable position in the points table in this tournament. Good start this so far from Noman Chawla. Again the ball coming back in, played towards point, no run taken. Talking about a tie match, what a contest we had last night here in the same venue when Sumia Gladiators were facing Burj Builder Hawks. The target was a pretty modest one of 126 and Burj Builder Hawks couldn't chase that down in the final over. This time the ball coming back in, smashed down the ground to the mid-off fielder. Good start there so far from Noman Chawla. He hasn't conceded any runs in his first 4 deliveries. Chaudhry Saif has been pretty tame in this tournament so far. No big score from him. On the other hand, Munib Javed scored magnificent 80 in their match against Sumia Gladiators. Down the track and played over the mid-off fielder. One bounce into the fence. In fact, it has been signaled as 6 by the umpire. What a good shot that was from Chaudhry Saif. He judged the length perfectly, came down the track. He knew the ball is going to be full and he smashed it over the head of the mid-off fielder. The fielder was inside the circle, so it was a pretty safe shot and the ball easily carried over the boundary for 6. So first 6 coming off the bat from Chaudhry Saif. Last ball of the over coming up.
Again coming down the track. Has he got an outside edge? No. There was a stumping chance as well. So first over has been bowled. NJS Chargers are 6 without a wicket. और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत जिंदगी। The fielder outside the 30-yard circle is at long off. All the fielders are inside the circle on the offside. Muneeb Javed is going to face his first delivery of this game. NJS Chargers getting that first maximum in their previous over. Coming off the bat from Chaudhry Saif. Lots of extra expectations from him in this game. This time played on the offside and taken at the field by the fielder at cover. Soft dismissal by Muneeb Javed. First ball wicket this for Mustafa Musa. It's a crucial game and a lot of expectation were there from Muneeb Javed. And he played that softly on the offside. As you can see, it was a short pitch delivery, nothing short in the end. It was so wide of him. And it was just a check shot. The ball just ballooned in the air and the fielder at cover took it very easily. So a first ball duck for Muneeb Javed, and NJS Chargers are 6 for 1. और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग। Shayan Mateen. The batsman dismissed on the previous delivery was Muneeb Javed. Muneeb Javed was the highest scorer in the only match they won against Sumia Gladiators at the same venue. So they were expecting him to score some good runs, especially in this batting power play. He's a power hitter. There you go again. Good delivery. Shayan Mateen had absolutely no clue where the ball was going. So a good start this from Mustafa Musa, picking up a wicket of his very first delivery of this game. As you can see, getting an inside edge of the very first ball, Shayan Mateen. He will be nervous. Good move by the fielding side. They have now deployed a first slip. This time played down the ground. The mid fielder cut that one off. No run taken. As I mentioned earlier, this is a very crucial game for NJS Chargers. They need to win tonight to make sure that they are still in place for the eliminator.
Chaudhary Saif now on strike. His stay at the crease will be crucial. He's a big player. He needs to stay there at the crease for a longer time. So far, he hasn't spent much time in the crease in the tournament so far. Consistently getting low scores. This time bowling it wide. The ball just moved away after pitching. Nicely gathered by the wicketkeeper. Wide signal by the umpire. Mashal Plastic Tigers. It's their third game tonight. Although they will be looking to win as well, but a loss will still keep their hopes alive. This time driven towards the offside. Slight misfield. But the fielder at deep cover will cut that one off. Just a single. No damage done. Shayan Mateen is back on strike. The long off fielder is now back inside the circle. This time cut that one away. The fielder at point was sharp. No run taken again. All the fielders on the leg side are inside the circle. There is no square leg. The fielder at fine leg is also inside. And there is this mid-wicket fielder standing on the edge of the circle. Mid-on, mid-off, both inside. The fielder at cover is outside the 30-yard circle though. Slower delivery. Played towards long off. Misfield. Will the batsman come back for the second? Yes, they will. Fielding plays a pretty important role in any match. 2 overs have been bowled. NJS Chargers are 11 for 1. मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, एसडी और एसबीसीए से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर Numan Chawla is going to continue from the other end. He conceded that 6 in his previous over, went wicketless. It was a good over overall. Just one maximum. And that too came in from the bat of Chaudhary Saif. NJS Chargers will be looking for Chaudhary Saif to stay at the crease for a longer time if they have to score anything between 140, 150. We have seen some low scoring thrillers as well in this tournament. 2 matches ending up in ties. This time pulled away. Wide of the fielder at long mid on. Nicely stopped. Just going to be a single. Talking about the fielding, even Burj Builder Hawks managed to get those 2 or 3 extra runs last night against Samia Gladiators of the misfield and overthrows. This time again, played towards mid-off, Shayan Mateen. This time playing towards the onside, finding the gap between square leg and short fine leg. The fielder is going to cut that one off. 2 runs taken. Nice timing on that occasion by the batsman. Numan Chawla continuously bringing the ball back into the right-handed batsman. The batsman was waiting for the ball to move in to his pads, easily guiding it down to fine leg. This time the ball coming back in, played towards the offside. Good single.
Good sharp running. It's pretty crucial for the batsman to keep rotating the strike when they are seeing their big shots aren't coming. The dot balls create pressure on the batting side. That's why it's necessary to keep the scoreboard moving by those singles and doubles. So far it's a pretty cautious start this from NJS Chargers. They are 15 for 1. They are still in the third over. This time smashed it over the fielder at mid-off. 1 bounce, 2 bounce and into the boundary for 4. Chaudhary Saif has got his eye in and he's looking dangerous. Noman Chawla adjusting his land on that occasion. He was bowling it full before, but this time he bowled that shot. The ball didn't come back in a lot. And Chaudhary Saif was waiting for it. Smash it over the fielder. This time again pulled that one away, finding the gap between the mid-wicket and mid-on. Consecutive boundaries. Good batting this from Chaudhary Saif. Three overs have been bowled. NJS Chargers are 23 for 1. मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर। Mustafa Musa is going to continue from the masjid end. We saw Chaudhary Saif smashing those 2 boundaries in the previous over. Will that be enough to bring him back in form? So far he has scored 16 of just 10 deliveries, striking at 160. That's what you want as a batting side, big players to fire on crucial matches like these. Shayan Mateen on the other hand has supported him well so far. This time bowling it wide. The ball moving away. Pretty versatile attack this from MASHAL Plastic Tigers. Noman Chawla bowling those in-swingers to the right-handed batsman and Mustafa Musa is taking the ball away. This time it's full toss. Played towards mid-off, finding the gap. Should have been a good effort by the fielder at mid-off. It's going to run away for another boundary. So 3 boundaries in a span of 3 balls for NJS Chargers, and they are looking good. This time coming down to the racket was a full toss and definitely should have been a better effort on that occasion by the fielder at mid-off. He just let that ball go. There should have been a dive. First boundary to Shayan Mateen. Score moves on to 28. The current run rate is almost 7 runs in over. 9 runs in over in fact. This time adjusting his line and length, bowling it slower, but the batsman was sharp enough to take the out single. Chaudhary Saif is now back on strike. Changes in the field. The fielder at mid-off has now moved back outside the 30-yard circle. The fielder at cover also been asked to move squarer. No one in the deep on the onside. This time again bowling it wide, bowling it slower. It was just inside the wide line. Batsman thought it was too wide enough not to play a shot. So this is starting out to be a very good start from NJS Chargers, although they have lost a very important wicket of Munib Javed. But nice good partnership building along. This time again taking the aerial route, but the field was adjusted and slight misfield and it's another boundary. Poor fielding effort this from the fielder at mid-off. Twice he has let that ball go. The bowler adjusted his field
Asked the fielder to go back outside the 30-yard circle, and this just should have been a single. Poor fielding effort. He never got into the position properly. His body should have been behind the ball. Second boundary of the over from Mustafa Musa. So he's proving to be a little expensive in his second over. This time bowled him. It was a slower delivery. And Chaudhry Saif completely disguised by the slowness of the ball on that occasion. Clever thinking by the bowler on that occasion again. After going for 2 consecutive boundaries, he bowled it slow, he bowled it in the line of the stumps, and the off stump went for a cartwheel. Chaudhry Saif was looking so good for his 20. And he will have to move back into the pavilion now. NJS Chargers are 33 for 2. कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट में विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com. Crucial wicket falling down on the previous delivery. Chaudhry Saif was looking so good for his 20. He was deceived completely by that slower delivery. He was looking to heave it on the onside, but completely was bamboozled by the slowness of the ball on that occasion. The new batsman is Furqan Ahmed. He's the left-handed batsman, so there will be an adjustment to the field for the new batsman. The fielder at square leg is outside the 30-yard circle. Mid-off and mid-on both inside. No one in the deep on the offside. Last ball coming off of the over. And this time playing it down to fine leg. Coming back for 2 for the batsman. 2 runs easily taken. The keeper threw at the bowling end, but the batsman was well inside. So after the end of the 4 overs, NJS Chargers are 35 for 2. शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज़, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट
ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल. There has been a change in the bowling attack from the opposite end. Noman Bari has brought himself into the attack. So far it is a good start from NJS Chargers. The run rate is not an issue, but the wickets column will be something that would be bothering the batting side. Two top order batsmen have been dismissed. Noman Bari starting with his slower left armers. Both the openers were pretty much capable of utilizing the batting power play. Both being dismissed by Mustafa Musa. This time played down the ground, the mid-off fielder, again a flumble. Single taken. Furqan Ahmed is on strike. The previous delivery that he faced struck his pad and brought 2 runs. It were 2 leg byes. Again there is deep square leg. The mid wicket is inside the circle. There is no short third man. Square leg moving, squarer. Change of angle from the bowler, bowling over the wicket. Nicely defended to the offside, no run taken. Toss has played a major role in this tournament so far. Majority of the teams have decided to bat first after winning the toss, and rightly so. Chasing has proven to be very difficult. This time bowling it wide and short. The batsman went for that cut shot, completely missing it. Still 1 over and 2 balls to go in this batting power play. So far they are scoring at over 8 runs and over. Again the bowler adjusting his field. This time again bowled that one wide, short, and he found the gap on that occasion, the batsman. This will go for the boundary. First boundary for the left-hander. Top shot that. All the fielders on the offside were inside the circle, and he was so perfectly found the gap. It was short. The previous delivery was short as well. Couldn't find the bat on that occasion. This time he found the meat of the bat as well as the gap. Last ball coming up. Short ball again. No run. The 5 overs have been bowled. NJS Chargers are 40 for 2. महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Mustafa Musa is going to continue with his 3rd over from the masjid end.
So far, he has been the only successful bowler in this innings, picking up the 2 wickets that have fallen. That too of Chaudhry Saif and Munib Javed, both very dangerous batsmen of the order. Shayan Mateen is going to face Mustafa Musa. This time taking the aerial route. Will that be taken at mid-off? What a wonderful catch that is. Good diving catch from the fielder at mid-off. And with that, Mustafa Musa has now picked up his 3rd wicket. Again, it was a full delivery. It was moving away. The batsman was looking to play it on the onside, getting a leading edge, and good diving, tumbling catch by the fielder at mid-off. So 3rd wicket down for NJS Chargers. And Shayan Mateen has gone back for 12. NJS Chargers are 40 for 3. रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें। जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है, तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है। Mustafa Musa is making it his habit of picking up a wicket of this first delivery in the over. He did that in his very first over, and now in his very 3rd over, the first delivery has brought the wicket, that too of Shayan Mateen. Three wickets, and in his 3rd over, Mustafa Musa. He was bowling out swingers to the right-handed batsman. Now he'll be looking to bring the ball back into the left-hander. Furqan Ahmed on strike. There you go. Big appeal, and it has been, in fact, it has taken his leg stump. Brute of a yorker that from Mustafa Musa. He was getting those perfect out swingers to the right-handed batsman, and this time he yorked the batsman with his beautiful in-swinger. What a lovely sight that is for the fast bowler. The leg stump uprooted, and with that, NJS Chargers have now lost their 4th wicket in the 6th over. Furqan Ahmed being dismissed for just 4. And NJS Chargers are now in trouble. जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली। We just witnessed a perfect in-swinger to the left-handed batsman by Mustafa Musa, who picked up his 4th wicket in this innings, and now he's on the hat-trick. The batsman on strike is the captain Saqib Ikhlas, and he will be under extreme pressure.
Not only he will have to negotiate this hat-trick ball, but he will have to bat deep in the order now as well, if NJS Chargers want to post a decent total tonight. Remember, it's a very crucial game for the NJS Chargers team. So hat-trick ball coming up, first slip in place. And it's an outside edge, and it's a hat-trick for Mustafa Musa. What a scene, what sides. This at TMC ground. Mustafa Musa has picked up the first hat-trick of this Youth Friendship League. It was a beautiful outswinger. It was full, and Saqib Ikhlas went for an out-cover drive, getting an outside edge, and keeper completed the easy catch. NJS Chargers have now lost their half of their side, and even the batting power play has not been done yet. Saqib Ikhlas going for the golden duck. NJS Chargers are 40 for 5. आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग Mustafa Musa picking up a hat-trick in his previous delivery. Wonderful piece of swing bowling this from him. He looks pumped up. NJS Chargers in big trouble. They have lost half of their side. 5 wickets down. The new batsman is Moiz Sultan. Both batsmen are yet to face first delivery. The fielding side are now applying extra pressure. More fielders are now deep inside the circle. The captain has taken the first slip. The fielder at fine leg is pretty fine as well. Good piece of bowling by that Mustafa Musa. Coming down the track again, bowling it full. The ball also came back in. But the batsman negotiated that swing by coming down the track. Otherwise, that would have been a good yorker as well. Mustafa Musa picking up the first 5-wicket haul of this tournament. That too in his just third over. This time again bowling it full. The batsman finding the gap. Just a single on that occasion. Top bowling this by Mustafa Musa. What a spell this is. Earlier we saw Bhuvneshwar Kumar picking up a 5-wicket haul with his swing bowling in the Asia Cup against Afghanistan, and now Mustafa Musa here in Youth Friendship League. Getting those 5 wickets. He's yet to complete his third over. Imran Chawla is now on strike. He will be under extreme pressure. The last ball of the power play coming up. And this time it's a good delivery. It was on to the stumps. Slight hesitation. No run taken though.
6 overs have been bowled. NJS Chargers are 41 for 5. Just look at the bowling card so far. Numan Chawla giving away 18 runs in his 2 overs. Mustafa Musa, the only wicket taker in this innings, and he has taken all those 5 wickets. Numan Bari only bowling 1 over, conceding 5 runs. NJS Chargers 41 for 5. एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Numan Bari is going to continue from the opposite end. What an eventful over that was from Mustafa Musa, the previous one, picking up a hat-trick, breaking the backbone of NJS Chargers side. The power play has been done. The fielding side can afford to have fielders outside the 30-yard circle now. This time bowling it wide, bowling it full. Wide signal by the umpire. Another extra run added. They have been pretty disciplined so far. The bowling side, MASHAL Plastic Tigers. This time again bowling it wide. The batsman completely missing it. Had that been gathered by the wicket keeper, there might have been a chance of stumping. This time the ball coming back in after pitching. The spinners do get good assistance here at TMC ground. The pitch does offer the turn for the spinners, especially if you can get those rip on the ball. This time bowling it fast outside the off stump. The batsman couldn't get bat on that occasion. Sharp wicket keeping by the wicket keeper. Moiz Sultan now has faced 5 deliveries and has just scored 1 run. This time playing it on the offside. Is that going to be a couple? No, just a single. Imran Chawla is on strike now. Numan Bari is going to continue over the wicket. He will be looking to turn the ball away from the right-handed batsman. Moving the long on fielder wider. This time it's a full delivery played towards the onside. Will be fielded by the bowler himself. But 1 run taken. NJS Chargers batsmen will be looking to calm the situation down now a bit. They need to get that partnership building. These 2 batsmen, I think, need to bat for another 5 or 6 overs. This time bowling it into the stumps. The fielder at mid-wicket didn't allow a single. This time again bowling it full. Again played straight to the mid-wicket fielder. Good diving stop. So the over has been bowled after 7 overs. NJS Chargers are 44 for 5.
कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। So Mustafa Musa is going to bowl out his spell. He will bowl his 4th over. Good decision. I think this is from the fielding side's captain. He's still getting to move the ball away from the right-handed batsman. I still think with the power play being done, they still need to have that first slip, because he has been moving the ball away. There's a good chance that he can get an outside edge. Imran Chawla hasn't faced many deliveries up till now, so he will be nervous. Mustafa Musa, if he can get one more wicket now, this will surely turn the match in the favor of the bowling side. NJS Chargers must have been thinking that they can post a decent total after winning the toss, because so far we have seen the side batting first have won the match. This time coming down the track, playing it on the offside. The fielder at point position was pretty sharp. Mustafa Musa, as we saw, picked up a hat-trick in his previous over, picking up 3 wickets in his first 3 deliveries of the previous over, completely shattering the hopes of NJS Chargers to post a big score. This time it was short, surprised the batsman, locked it away nicely. Good piece of aggression being shown by the bowler to the batsman. Imran Chawla is a handy all-rounder. You will see him bowl those handy leg spinners when NJS Chargers will be bowling. All they need to do is to see out this over from Mustafa Musa. This time again coming down the track, and it was into the stumps. Played towards mid-on, no run taken. No risk needs to be taken at this stage of the innings. They simply cannot afford to lose another wicket. Good pressure being applied by the fielding side. That's what fast bowlers can do if they can get the ball to swing earlier on in the innings. We have seen teams relying more on the spinners in previous matches, but Mustafa Musa has proven them all wrong. This time again, good length delivery, playing towards the onside. 4 dot balls in the over so far. What a spell this is from Mustafa Musa. So far he has only gone for 16 runs and has now picked up 5 wickets. This time again just missing the stumps.
Imran Chawla was expecting the ball to bounce a bit more. There was a big gap between his body and bat, and the ball just went inside, luckily missing the top of off stump. Could have been a 6 wicket for Mustafa Musa. He's living dangerously. This time, as you see, coming down the track, completely missing it. I think he also changed his pace on that occasion, Mustafa Musa. Good, clever, fast bowling. Last ball of the over coming up. So far, just 1 run has been scored in this over. Top spell this from Mustafa Musa. This time again coming down the track, and he has ballooned that one in the air. Will that be the 6th wicket for Mustafa Musa? It will. So what a spell this is. He started off his first over with a wicket, and now he has ended his 4th over with another wicket. Mustafa Musa bowling it slower. The batsman was too early into that shot, and he just ballooned up in the air. And Mustafa Musa taking up the catch of his own bowling. NJS Chargers have now lost their 6th wicket, and they are 45 for 6. Mustafa Musa taking up all those 6 wickets. Mustafa Musa is done with his spell, and what a spell this was. 4 overs, picking up 6 wickets for just 16 runs. And NJS Chargers are now completely struggling at 45 for 6. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट। In the bowling attack, Ali Tahir Chawla is going to come into the attack, replacing Noman Bari, the captain. What a spell we just saw from Mustafa Musa, picking up his 6th wicket of the last ball of his spell. Surely these were the best figures in this tournament so far. As I was mentioning earlier, in previous games, teams have relied too much on spinners. They haven't utilized the swing on the new ball. But MASHAL Plastic Tigers have read the conditions well tonight. Imran Chawla is going to face Ali Tahir. Right arm leg spinner. This time it's short cut away. Fielded by the fielder at point. No run taken. The new batsman on the non-striker's end is Anas Tariq, another hard-hitting batsman. This time clipped on the onside. The fielder at deep mid-wicket is after it. Just a single. Good pressure is being applied by the fielding side. NJS Chargers were given a good start by Chaudhry Saif when he smacked few boundaries. But since his departure, their batting line has totally crumbled. Courtesy, some brilliant swing bowling from Mustafa Musa.
We are in the 9th over and NJS Chargers have already lost their 6 wickets. Anas Tariq is going to face his first delivery. Wide-edge gully there. Now he's moving into the first slip position. He'll be looking for an outside edge for the new batsman. This time bowling it full, nicely defended on the offside by Anas. Defended from the meat of his bat. Just a single so far from this over. This time bowling it short and Anas Tariq guiding it down to third man. Slight misfield and this will be another boundary. Welcome boundary to Anas Tariq and NJS Chargers. Ali Tahir on that occasion dropping it short, was looking for some turn and Anas Tariq played it very late. There you see he played that late, guided down to third man and there was a bit of a fumble. And with this outfield there was no chance of stopping anyone. So 50 comes up for NJS Chargers with that boundary. This time again the ball coming back in. Nicely played with the straight bat by Anas Tariq. No run taken. I think that's what Mustafa Musa's spell has done. The other bowlers are not feeling relaxed. They can look for their turn. They can look to flight that delivery now without having to think too much about getting wickets. This time again playing it on the offside. The fielder at short third man was pretty sharp. No run taken. So 9 overs have been bowled and NJS Chargers are 50 for 6. कीमत आला मेयार एचडी और एसबीसी से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कह रहा है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। So Mustafa Musa has been replaced by Mubashir Anwar from the Masjid end. Another spinner has been brought into the attack. NJS Chargers are 50 for 6. I think they should still believe in themselves. If they can post another decent total, 120, 130, they can still make a match of it. As we saw last night, Somia Gladiators only managing 125 runs, and in return, Burj Builder Hawks couldn't chase it down, and the match ended up in a tie. This time, drifting it down the leg side, signal as wide by the umpire. I think it's a good time for spinners to bowl, especially during the middle stages of the innings when the fielders are deep and there are more chances to prevent those boundaries. This time again, playing it towards long off, just a single to Imran Chawla. Yes, they have scored under 6 runs and over so far, but they cannot afford to take any risks. All they need to do is to build a good, decent partnership, and Anas Tariq is more than capable in doing that. Nicely defended to the cover fielder. That's a very plus point with Anas Tariq, that he looks to play with the straight bat more often. There you see again the bowler bowling it into the stumps, not giving any room outside the off stump. Anas Tariq scoring the boundary in the previous over. This time again playing it on the offside. It will just be a single. Good start this from Mubashir Anwar. So far conceding only 3 runs in his 5 deliveries.
The last ball of the 10th over coming up. This time again guiding it down to the point fielder. Dot ball. So after 10 overs, NJS Chargers are 53 for 6. Bowling 2 overs for 18. Mustafa Musa doing all the damage, conceding just 6 runs in his spell, bowling a maiden and picking up 6 wickets. Noman Bari, the captain, going for 8 runs in his 2 over. Ali Tahir going for 5 in 1 over. And Mubashir Anwar going for just 3 runs in his previous over. Ali Tahir Chawla is going to continue for in his second over from the opposite end. This time bowling it full, and he was lucky. Anas Tariq should consider himself very lucky that the ball didn't hit his leg stump. It was full, it was slow. He was looking to sweep it on the onside, completely missing it. Nicely gathered by the wicketkeeper as well. Dot ball to start the over with. 53 for 6 NJS Chargers. What is a good total on this pitch? This time again bowling it into the stumps. Playing towards mid-off, another single taken. Playing towards mid-on in fact. Big responsibility on the shoulders of Anas Tariq and Imran Chawla now. This is the last recognized batting pair, I guess, of the NJS Chargers batting order. Imran Chawla taking his time. He doesn't want to lose his wicket early on. He wants to play there till the end. This time nicely defended on the onside. So far we haven't seen much turn from the leg spinner. The pitch is playing completely differently to what it played in previous matches. Earlier we saw spinner getting some assistance. Tonight it was completely Mustafa Musa's show. This time again playing it on the onside. The fielder at mid-wicket diving to his right, preventing that single. Not many fielders are inside the circle, but still the bowlers are bowling according to the field, not giving those extra runs away. Dot balls will create pressure on NJS Chargers. This time driven on the offside, finding the gap between the point fielder and short third man, and this ball will run away for the boundary. First boundary coming off the bat from Imran Chawla. The score moves on to 58. This time Ali Tahir bowling it flighted outside the off stump. Nicely driven that from Imran Chawla. The fielder at short third man could have dived for it, but he let that ball go and the ball just raced away to the boundary. So Ali Tahir has now conceded 2 boundaries in his 2 overs so far. Still going pretty economical. Last ball of the over coming up. Score is 58 for 6. This time bowling it down the leg side, and the fielder and the keeper failed to gather that one off. Big gap between square leg and fine leg fielder, and the ball is going to roll away to the boundary. So 5 extra runs have been added. Ali Tahir losing his line and length in the previous delivery, bowling it down the leg side, and there was no fielder at short fine leg. 5 runs taken. This time again bowling it down the leg side again missed by the wicketkeeper. Exactly a carbon copy of what happened in the previous delivery. Another 5 runs adding to NJS Chargers total. They won't mind the runs as long as they come. There you see again bowling it down the leg side, looking for some turn.
No chance for the wicketkeeper. It was kept too low. And again, there was no fielder at short fine leg. For fielders, I think short fine leg and short third man are pretty crucial positions. If the batsman can get top edge, there should be a fielder behind the wicketkeeper. This time bowling it full. Played straight back to the bowler. Dot ball to end the over. After 11 overs, NJS Chargers are moving along 68 for 6. लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बिजली played by Anas Tariq. This time again easily defended on the offside. It was a big over the previous one, so they can afford to play few dots in this over just to get their timing back in. Anas Tariq taking his time to adjust. This time going for that big heave on the offside, missing it altogether. This time again bowling it down the leg side, another wide from the bowler. They were pretty disciplined 2 overs ago, but now they have conceded 15 runs in wides. Hopefully they won't prove to be the difference at the end of the game tonight. This time bowling it short and the ball came back in. Nicely played down to long on. Just a single though. Nice little partnership building here between Imran Chawla and Anas Tariq. Oh, defended to the bowler. Imran Chawla is not in a mood to give his wicket away. He's taking his time at the crease. This time playing it on the onside. The fielder at deep mid wicket will cut that one off. Mustafa Musa fielding it on that occasion. Mustafa Musa has been the hero of the night so far, picking up all those 6 wickets. So the over has been done. NJS Chargers are 6 down. बेहतरीन और सेहतमंद जिंदगी हो जहां आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों, तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। जी Numan Bari, the captain, has brought himself back into the attack from the opposite end now. 3 runs coming of the last over. The scoreboard moving along 71 for 6 NJS Chargers after 12. Still scoring under 6 runs and over. But run rate, I think, is not an issue at this stage of the innings. They still need to make sure that they don't lose another wicket. Even if they can play at run a ball from here on, they can still end up with 120 or 130. And as we saw last night, even a low score can prove out to be a nail-biting contest. Numan Bari this time bowling it wide, bowling it slower. Nicely defended on the offside by Imran Chawla. Getting all the appreciation from the batting dugout, the 2 batsmen out at the crease. They knows how important it is for them to stay back. This time nicely guided down to third man.
Just a single. There is a fumble. Will they go for the overthrow? No. Scoreboard moving along. 72 for 6 NJS Chargers. Anas Tariq is now on strike. Only one maximum has been hit in this inning so far. This time Anas Tariq letting that ball go. It was too wide outside the off stump to attempt any sort of shot. Wide signal by the umpire. This time again bowling it slow, Numan Bari. He has been mixing his length and line. That's why he has been pretty economical so far. Going at 3 runs and over in his third over now. This time bowling it outside. An easy catch for the fielder at short third man. He bowled it short, dragged his length back a bit. Anas Tariq was looking to play that big shot. Didn't time it as well on that occasion. Soft dismissal again. There you see bowling it wide. Anas Tariq going for that flashy off drive. But all he managed to do was to get an outside edge. And the fielder at short third man completing that catch. And with that dismissal, NJS Chargers are 73 for 7. मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइड पर। कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल Numan Bari picking up his first wicket in this previous ball. Anas Tariq, the batsman, dismissed. Khurram Dilawar is the new batsman in. NJS Chargers are 73 for 7. It was a nice, decent partnership building up between Imran Chawla and Anas Tariq and Numan Bari.